question is to the entire cast. Since you said, Tale Todenge is more to do with freedom, that's the connotation. Independence Day is just around the corner. I would like to know from each and every one of you, what does freedom mean to you? Shekhar, this you can start on this. I think we should, it's very important to say that the division what people do in religion, a lot of negatives are there. I think they all should turn into positives, and I think we'll be free, we'll feel free when people respect women, and there's no divide in religion. That's what I feel. Dada? Good evening or good afternoon, ladies and gentlemen. Blue. पहले तो सबको मुबारकबाद स्वतंत्रता दिवस की. शाहरुख, ब्लू फ्रीडम मतलब क्या? घूम रहे, फिर रहे, मजे ले रहे. कुछ तुम लोग लिखेंगा तो उसके ऊपर चढ़म चढ़ी होगी, वो फ्रीडम देना. कुछ बनाएंगे और उसके ऊपर बवाल बाद में होगा सेंसर के बाद, वो फ्रीडम नहीं ना. बड़ो वही है. पहले तो यार समझ लो यार, ये बोलते लेते अच्छा है कि बाबा इतने बड़े बड़े लोग शहीद हुए अपनी को आज़ादी दिलाने के लिए, उनकी इज्जत करो, उनके बारे में भी सोचो. बस उतना तुम्हारे दिमाग को फ्री करो, बाकी अच्छा इंसान बन के जियो, बाकी क्या बड़ो. Sorry guys, I'm so sorry. I mean, I think that's what it is, man. I don't know. I think Dada said it all. Just take it easy. Free your mind. Yeah, free your mind. Yeah, relax कर और ज़्यादा एक दूसरे पे चढ़ो मत. Sorry guys. I mean, that's what I feel. Sorry. You said it all. And I would like to say that Baban. That freedom is what Shah sir as a producer gave it to Farah, and Farah as a director gave it to us, to all of actors. I think I've done so many films, but I would like to say that I think working with Farah was the most memorable experience I ever had in my life of 15, 16 years, whatever I've struggled as an actor. But I think this is what freedom for me is. And Farah gave you freedom. And you're all going to do this movie free. Baman, you want to talk about freedom? I think Dada said... Yes, ek dusre pe chodo mat bas. That's the only thing I heard. Baban's not had that problem in a long time, so it's okay. Abhishek? Yeah, it's difficult to go after that. Dada's talking about freedom. Baman wants to free himself. It's freedom. Very honestly, means the ability and the want to do what you want to do when you want to do it, to love who you want when you want, to make the kind of film that you want when you want, and not be questioned about it. And that's the most important. To be able to live your life on your terms and conditions. That's freedom. Deepika? Yeah. I think we have all answered this question. I'm going to say I had exactly the same thought as Abhishek, where I think it's about just being able to express yourself and live your life the way you want to without having to worry about anyone or anything. To be able to express yourself. Vivan? Yeah, Vivan, wake up. I think freedom basically in this context, I'd repeat what Sonu sir said, that freedom, You're the youngest. the ability to work with the most wonderful people in the world and to have fun while doing it. That, as Sonu sir said, it's truly liberating, and it really means it encapsulates freedom. And I think the crew would agree with me. Another thing that encapsulates freedom is pack up. Vishal? Nice. I mean, I really don't know what to say after all these, each description is equally true, but for me, freedom is also something that comes with a sense of responsibility, something that takes the message of freedom to everyone, and that is something that this film also does. Individual personal freedom, how to go beyond your personal limitations. It's something that you will find is a very strong message in all of Farah's films. There's always people who are limited by their circumstance and always people who transcend that, and that is true freedom. Okay.
I'd like to say something. We are going to be, touring all over the world, all over the place, having similar press conferences like this. We'll all be dressed up, sitting. But just one more time, I'd like to acknowledge the wonderful contribution of the ADs and the people working behind the scene, and the sound, and the guy sitting in the editing room. We'll be going around doing our bit, but we can't thank you enough. And Farah did say you're the best AD team in the world. Yeah, but she lied. इतनी गाली पड़ती थी तुम लोगों को, but और गाली खा के टिके हुए इसलिए बेस्ट है. इसलिए you are the best team. Exactly what I was saying. But you were really there because you really loved the film and what we were standing for. And here is the fruit of your labor. Thank you so much. Thank you so much, all of you. A pleasant and happy evening to everyone. Is that Sumit? Is that Sumit? Yes. Has to be Sumit. Sumit, is that you? Yes. Yeah. Hello Sumit, how are you? Yeah, I'm trying to be okay. Yeah. Where's my chocolate? Oh. Yeah. You get her chocolate? Every time. Every time. Farah, आप लोगों ने सबको thank you किया. Let me also thank your promotional and communication team, Madhvi. More, I forgot Mandvi, 1 minute. Yes, Mandvi, and most importantly, Trigger Happy, who has made this wonderful trailer for us. We have to thank them. So we thank And Red Mandvi Chillies also. And Mandvi. Okay, and T-Series, who's glaring at me from here. Yeah. Thank you, Bhushan, Vinod. Mr. Khan, you are the senior most over here and the producer. No, Baman is by far the senior most. Do you think Baman is younger than Shah Rukh? Yeah. Security, इस आदमी को बाहर फेंक दो. So, Shah Rukh, could you please allow me if I can ask Farah and then come back to you? बेटा जो करना है तो बुड्ढा बोल दिया तूने जो करना कर तू. तो लगता है कि ये पूरी की पूरी सभा तेरे बाप की है. जो करना है तू कर बेटा. Yes, Sumit, yes. फरा ऐसा क्यों सोचा आपने कि 24 अगस्त 2014 को 5:15 19 सेकंड पर आप सहारा स्टार होटल के नए ऑडिटोरियम में अपने फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करेंगे? क्योंकि आपकी गणित बहुत अच्छी है इसलिए. एक्चुअली ये तो शाहरुख ही आंसर कर सकते हैं और करीम एंड करुणा एंड वेंकी वी वांटेड क्योंकि हमारी जो फिल्म का कॉन्सेप्ट है जैसा एक फुल हमारी कोशिश ये है कि एक क्विंटेसेंशियल अल्टीमेट बॉलीवुड फिल्म बनाएं जिसमें हर वो चीज़ है और उस तमीज़ और उस खुशी और उस बड़प्पन के साथ है कि हमारी इज्जत बढ़े हमारे देशवासियों की. एंड इसके अंदर एक पेट्रियाटिक एंगल भी है इंडिया वाले का. हमारे दोस्त रोहित की फिल्म आ रही थी सिंघम. नॉर्मली फिल्म का ट्रेलर जो है किसी फिल्म के साथ लगाया जाता है थर्सडे फ्राइडे को. तो हर चीज़ जो है एक समा बन गया और हमें लगा हमारा कॉन्सेप्ट इंडिया वाले है. 14 अगस्त को या 15 अगस्त को हमारा ट्रेलर थिएटर्स में रिलीज़ होगा. एंड हमारी जो सारी टीम है उनको ऐसा लगा ये वक्त सही है तो हमने कर दिया. और आई एम सॉरी इफ इट फील्स रॉन्ग. नो वेरी गुड. Thank अब you. इसके बाद सारे यहाँ लाइन लग जाएगी इस ऑडिटोरियम में. अभी खत्म नहीं हुआ बेटा. उसके पास बहुत बातें करने की. आप लोग जल्दी में हैं? नहीं. ओके. फरा पहली बार आपने इंडिया से बाहर शूटिंग की है, ऐसा क्यों? स्क्रिप्ट की डिमांड थी सुमित. मतलब जो न्यू ईयर था वो दुबई में होता है और इसीलिए क्योंकि स्क्रिप्ट में लिखा गया था ऐसा. फरा यही होता है कि हर साल सब लोग आप लोग दुबई चले जाते हो. 31 से लेकर 3 तारीख तक सब लोग दुबई में. मैं पहली बार गई हूँ दुबई यार. पर लोग दुबई जाते क्यों हैं स्टार्स? हाँ सॉरी क्यों गए थे तुम लोग दुबई कम वक्त तो एक बात करना. अभी ये शो के बाद ना जो तू पी के आया मुझको भी पिलाना प्लीज यार. बहुत मजा आ रहा है मेरे को यार. हमको भी उतना ही मजा करना है जितना मजा तू कर रहा है इस वक्त. शाहरुख एक चीज मुझे बताइए, इन दिनों आपकी सारी जो फिल्म्स आती हैं UA 1.5 साल बाद आई है दोस्त. इन दोनों मतलब ऐसे बोला हर हफ्ते एक पिक्चर आती है मेरी. मतलब वो एक हाँ ठीक है. हाँ बोल. UA होती है A होती है. ये कौन सी होगी? ए नहीं हुई है. इसकी कौन सी पिक्चर ए हुई है? यू हैव डन अ ए मूवी. वो देख कर आया. तुम जो पी कर आया जो देख कर आया मुझे मालूम नहीं दोस्त. बट हाँ मतलब ये UA होगी या क्या होगी? मुझे पता नहीं. ये UAE में बनाई गई है. UAE
में इसकी शूटिंग हुई है. That is where Sumit UAE होगी. UAE में. अच्छा, आपने इससे पहले कहा था कि आपकी हर फिल्म में आपकी हीरोइन का नाम सबसे पहले आएगा, तो इस फिल्म में भी ये होगा? जी, विवान का नाम सबसे पहले आ रहा है.